So now it is dance time, some 10 to 15 minutes. So normally every day we keep one dancing session 10 minutes. Prabhus will dance here, Matajis will dance that room. Prabhus will dance in this room, Matajis will dance in this room 10 to 15 minutes. Just every day. ठीक है, आप लोग उस रूम में जाइए. Dancing just 10 minutes का. आकांक्षा एक्सपर्ट है, आकांक्षा एक्सपर्ट. ठीक है. तो आकांक्षा इनको थोड़ा जल्दी प्रेशर दे. आफ्टर दैट भावगीत तक थोड़ा सा डांस कर लेते हैं और रहता है इसमें हेल्थ भी अच्छा हो जाता है डांस करने से. आफ्टर दैट भावगीत तक फाइनली भावगीत लास्ट में भावगीत क्लास हो. सबका नींद भी थोड़ा छूट जाएगा डांस करने से. भावगीत क्लास होगा तो हाँ कनेक्शन इसमें कर दीजिए. साउंड इसका मोबाइल का जोर जोर है ठीक है.
Prabhu, good for health also. Dancing, huh? परेड अभी ज्वाइन करके दे दीजिए. खत्म हो गया क्या? आपका जाना है? ठीक. किसी और का मोबाइल लीजिए. एक ही सिंह एक मोबाइल दे दीजिए. हाँ ठीक है, उसी को मेरे पास दे दीजिए. परेड ये एक ही सिंह का मोबाइल दे दीजिए मेरे पास. इधर दे दीजिए. ठीक है, उसको खोल के हाँ जस्ट इधर रख दीजिए. चैप्टर 3 रिसाइटेशन भगवद गीता खोल के दीजिए. हाँ, प्रभु लोगों को भी दे दीजिए. मास्टर जी, वो प्रभु लोगों को दे दीजिए, बुक दे दीजिए. हिंदी या इंग्लिश? हिंदी इंग्लिश दोनों ठीक है. हिंदी ना मास्टर जी, हिंदी बुक दे दीजिए. हाँ ठीक है. हरे कृष्ण. हाँ यस ब्रिंग. हिंदी इनको भी दीजिए. हिंदी नहीं है. हिंदी इधर कुछ होगा देखिए. दो ही हिंदी था. हिंदी और दोनों कौन लिया? पापा के पास. और किसका? दो हिंदी था ना. एक इनके पास नहीं. आप यू टेक इंग्लिश. अच्छा इंग्लिश ओनली. हिंदी और कौन? ठीक है. ये तो आकांक्षा मोबाइल में खोल के देख सकते, शायद उसमें हिंदी होगा. vedabase.io. 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 उसमें भगवद गीता में जाके देन उसमें चैप्टर 3 देन ऊपर एक एडवांस व्यू बोल के आएगा. डिफ़ॉल्ट व्यू एडवांस व्यू आया. हाँ एडवांस व्यू अभी आ गया होगा. डिफ़ॉल्ट को क्लिक करेगा तो एडवांस में आएगा. एडवांस में कोई भी हाइड कर सकता है. सिनोनिम को क्लिक करिए तो हाइड हो जाएगा. देन ट्रांसलेशन क्लिक करिए, हाइड हो जाएगा. परपोर्ट को भी हाइड कर दीजिए. ओनली देवनागरी रहने दीजिए. देवनागरी छोड़ के बाकी सब हाइड कर दो. आ गया? ठीक है, मम्मी सुनेगी. एडवांस व्यू आ गया था. एडवांस व्यू नहीं आ रहा सर, ओनली डिफ़ॉल्ट व्यू दिखा रहा है. डिफ़ॉल्ट व्यू पर क्लिक करेगा तो एडवांस व्यू आएगा. डिफ़ॉल्ट व्यू जहाँ लिखा है ना, ग्रुप में ऐड शेयर किया हूं सर. ऐड. हाँ ठीक है. मैं वो उतना तक खुल गया. डिफ़ॉल्ट व्यू में क्लिक करेगा तो एडवांस व्यू आएगा. एडवांस व्यू नहीं आ रहा, क्लिक नहीं हो रहा. अच्छा चैप्टर 3 ना. ठीक है, मैं खोलती हूँ. हाँ. चैप्टर 3 में दिया ना. बनोगे? अर्जुन उवाच जयसि चेत्कर्मणस्ते मतबुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चितं येन श्रेयोऽहम् अप्नुयाम्. श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्माणं मनरम्भन् नैष्कर्मं पुरुषः स्नुते
न च शन्नशनादेवा सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते ह्यवश्यकर्म सर्वप्रकृतिर्जैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य अस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्तु इन्द्रियाणि मनसा नियमारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म तं कर्म ज्यो हि अकर्मणा शरीरजत्रा विचाते न प्रसिद्धयेत् अकर्मणा यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनं तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गो समाचरन् सः यज्ञः प्रजा सृष्टा पुरा वाचा प्रजापति अनेन प्रसविष्यताम् एषा वस्तु इष्टकामधुक् देवान् भावयेतानेन ते देवान् भावयन्तु वा परस्परं भावयन्तः श्रेयो परम् अवाप्स्यत इष्टान् भोगान् हि वो देवान् दर्शन्ते यज्ञभाविता तैर्दत्ता न प्रदेभ्यो जो भुङ्क्ते तेन एव स यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ति सर्वकिल्बिषै भुञ्जाते तु अहं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्नसम्भव यज्ञात् भवन्ति पर्जन्य यज्ञकर्म समुद्भवम् विद्धि ब्रह्मक्षारसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतो ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं ननुवर्तयति हज अघैरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति यस्तु आत्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानव मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो कृतेन कश्चन श्रुतेषु कश्चित् अर्थो व्यपाश्रय तस्मात् अशक्तो सततं कार्यं कर्म समाचरम् अशक्तो हि आचरन् कर्म परम् आप्नोति पुरुषः हि संसिद्धिम् अस्थितो जनकादय लोकसङ्ग्रामेवाभिपुष्टुं कर्तुमर्हति आचरति श्रेष्ठस्तत्तत् एवेतरो जना स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानावप्तम् अवप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदीयं न वर्तेयं जातु कर्माणि अतन्द्रिता मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उच्छिद्योरिमे लोकाः न कुर्यं कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता वहन्नम् इमः प्रजा शक्तो कर्माणि अविद्यांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्यांस्तथा शक्तो चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहं न बुद्धिभेदं जनायेत् अज्ञानो कर्मसङ्गिनं जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तो समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणकर्माणि सर्वशः अहङ्कारो विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते वित्तो महाबाहो गुणकर्मो विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्ता न सज्जन्ते प्रकृतिर्गुणसम्मूढः सज्जन्ते गुणकर्मसु तन् अकृष्णविदमन्दन् कृष्ण भिन्ना विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यासाध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धश्च विगतो जरा येमे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानव श्रद्धावन्तनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः असूयन्तो ननुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानो विमूढस्तं विद्धि नष्टन् अचेतसा सादृशं चेष्टते स प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं जाति भूतानि निग्रह किं करिष्यसि यस् इन्द्रियार्थे रागदेशौ व्यवस्थितौ तौ वशम् अगच्छेत् तौ हि यस्य परिपन्थिनं सधर्मविगुणात् परधर्मो सनुष्ठितं सधर्मे निधनं श्रेयो परधर्मो भयावहत् उवाच अतो केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छमपि वर्ष्णेय बलदेव निवाजितः अनुवाच कामेश क्रोधेश रजगुणो समुद्भव महाशनो महापाप्मो विद्धि येनम् इह वैरिणम्
देवानीर्यथा आदर्शमलेन च यथा उल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदम् आवृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिन नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयति येषां ज्ञानम् आवृत्तदेहिनम् तस्मात् इन्द्रियाणि आदौ नियमाभरतर्षभ पापमानं प्रजायेनं ज्ञानं विज्ञाननाशनं यानि पराणि याहुरिन्द्रियेभ्यो परं मनः मनुष्यस्तु परा बुद्धिर्जो बुद्धे परतस्तु स एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्थाप आत्मानमात्मना यही शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुराशदम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कहाँ तक हुआ था लास्ट टाइम? अप टू व्हाट? हाँ 13 हुआ था, बट ये लोगों के लिए थोड़ा स्टार्टिंग से बोल दूँ क्या आप लोगों के लिए? ठीक है, अभी नया है ना, ठीक है। तो ये चैप्टर है कर्मा योगा, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश किसको पता नहीं है? दैट मैडम you don't know Hindi, na? Okay, then I'll tell a mixture. I'll tell more of Hindi because more people are Hindi, because you already know something, so I'll tell little bit of English. Okay. So इधर अर्जुन का क्वेश्चन है। So इसके पहले जो सेकंड चैप्टर था, ये भगवद गीता तो पता है ना कहाँ हो रहा है? भगवद गीता कहाँ बोला गया वो आपको पता है ना? कहाँ? कुरुक्षेत्र में। युद्ध के पहले, युद्ध चालू होने वाला उसके पहले ये हो रहा है। तो उसमें बहुत कुछ इंस्ट्रक्शन कृष्णा दिया है। तो इसके पहले वाला जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, उसको बोलते हैं भगवद गीता का सामरी है। तो उसमें सारे टाइप का योग के बारे में बताया है, कर्म योगा, ज्ञान योगा, भक्ति का, सभी के बारे में, बुद्धि योगा, छोटा छोटा करके नाटसेल में कृष्णा ने बताया थोड़ा सा। नाटसेल का हिंदी क्या है? नाटसेल मतलब जिस्ट का हिंदी क्या है? जिस्ट समरी जिस्ट का हिंदी क्या है? सारांश। ओके, ठीक है। उसका सारांश पूरा उसी चैप्टर में बता दिया, तो बहुत कुछ बताया। सो कृष्णा हैज टोल्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन चैप्टर 2, कर्म योगा, ज्ञान योगा, बुद्धि योगा, सांख्य योगा, एवरीथिंग ही हैज टोल्ड. So Arjuna got confused what actually he has to follow, because towards the end Krishna told apuriyamana machala pratishtham samudramapo pravishanti tadvat kamayam pravishanti sarve shashantim apnoti na kamakami. So at the end of second chapter he told like this: apuriyamanam achala pratishtham. Apuriyamanam means like a samudra, like a ocean. जैसे समुंदर है ना, समुंदर बहुत बड़ा है, उसमें नदी का पानी आएगा तो उसको कुछ ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा. सो इफ इन द ओशन रिवर वाटर ऑफ द रिवर्स आर कमिंग, इट इज़ नॉट फीलिंग डिस्टर्ब्ड बिकॉज दे आर टू स्मॉल कंपेयर टू द ओशन. सिमिलरली समुद्रमापो अचल प्रतिष्ठम अपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापो, अपो मीन्स रिवर, समुद्रमापो अचल प्रति तद्वात कामजम प्रविशन्ति सर्वे. सिमिलरली काम, desire enters to such a person who is a pure devotee. Desire enters to such a person like the rivers only, but he doesn't get disturbed. So you should be like that Krishna taught him. So Arjuna is thinking, if I have to be like that, then it is opposite of doing fighting. So it must be opposite of doing fighting. I should sit in a place calmly and meditate and achieve that quality. So Arjuna को confusion हुआ, तो ऐसा क्वालिटी हमको कैसे आ सकता है कि हम कुछ भी काम से हम डिस्टर्ब नहीं होंगे? तो ऐसे तो युद्ध करने से पॉसिबल नहीं है, तो हमको जंगल में जाके ध्यान करना पड़ेगा, ऐसे सोच रहा होगा. तो अर्जुना, तो इसलिए उनका कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए इस चैप्टर का जो स्टार्टिंग है, जय श्री चित कर्मा था, उसमें अपना डाउट को क्लियर कर रहे हैं. तो हमको कभी भी अपना डाउट क्लियर करना चाहिए. डाउट क्लियर करने का भी एक तरीका है, चैप्टर 2 में ही 2.7 में बोला है. 2.7 क्या है? कार्पण्य दोषो अपवातो स्वभाव पृच्छामि तम धर्म समूढ़जिता जय श्रेया शयन निश्चितान भूहितान में शिष्यास्त्याम साधुमाम तम प्रपन्नम. सो अर्जुन अभी बोल रहे हैं, इसके पहले बहुत लॉजिक दे रहा था अर्जुन क्यों फाइट नहीं करना चाहता है. अभी मैं युद्ध करूंगा तो सब लोग विधवा हो जाएंगे, इतना लोग मरेंगे तो सब विधवा हो जाएगा, हमारा फैमिली ट्रेडिशंस नहीं रहेगा, सब कुछ बहुत लॉजिकल बहुत अच्छे से बताया. बट फिर भी उनको खुद समझ में आ गया कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ.
तो जब वो कंफ्यूज हुआ, यू नो हिंदी, रविता जी यू नो हिंदी, जब वो कंफ्यूज हुआ तब वो सरेंडर कर रहा है कृष्णा के पास। तो पहला स्टेप है हमारे, जब कंफ्यूजन आएगा तो हमारा हायर अथॉरिटी के पास हमको सरेंडर करना चाहिए कि मेरा कंफ्यूजन है। तो अर्जुन ने उसी किया 2.7 में, कार्पण्य दोषो अपहतो स्वभाव पृच्छामितं धर्म समूढ़चेता। कार्पण्य दोषो अपहतो, आई एम अफ्लिक्टेड बाय माइजरली वीकनेस। सो माइजरली वीकनेस, माइजर, व्हाई इट इज कॉल्ड माइजर? माइजर का मतलब क्या है? नॉर्मल मतलब क्या है माइजर का? कंजूस। यू नो माइजर, यू नो ना माती जी? माइजर मीन्स यू नो ना माइजर? हाँ, कंजूस means who doesn't spend money, who has lot of money but doesn't spend. So here why that is told, because our human birth is very precious, very precious. After 84 lakhs of species we get this human birth. It is told labdha sudurlabham idam bahu shambhavante manushim anityam arthadam apiyadhira turnam jateto apateto mrityu javat nisresha vishaya kholu sarvatashad. So labdha sudurlabham idam, this human birth is very sudurlabh. Durlabh means very difficult to obtain, and sudurlabh means still more, much more difficult to obtain this human birth, because we undergo 84 lakhs of species starting from insects, worms, animals, plants, all these things. Finally we get this human birth, so it is very rare. So labdha sudurlabha, so this sudurlabha, you got this sudurlabha, very difficult to obtain human birth. So idam bahu shambhavante, after lots of probabilities and lots of other things. So manusham arthodam, so this human birth is arthodam, is meaningful. Anityam, but still it is also anityam. Anityam means non-temperate, means anytime our life can go. Today, next moment I can have heart attack, and next after 1 year, after 10 years, nobody can guarantee that I will live this many years. In Kali Yuga maximum we can live 100 years. So that is the maximum, but any moment we can die. So labdha sudurlabha idam bahu shambhavante manusham anityam. So it is anityam. Anityam is not nitya, not eternal, not always. This life also, this body will not be there permanently. Anityam apyo dhiro. So if you become a dhira, so you understand that this is also temporary. Apyo dhiro turnam jateto apadana mishra nisresha vishaya kholu sarvatashad. Nisresha. So you aim for nisresha. Nisresha means shreya. One is preya, one is shreya. Preya means whatever we normally desire. Desire a good wife, good money, good position. These are all called preya, because these are all temporary. So that's why it is called preya. But we have to aspire for something called shreya. Shreya means which does eternal good for ourselves and also for others. So nisresha, that is called nisresha vishaya kholu sarvatashad. Whatever vishaya bhog means indriya bhog means sense enjoyment, whatever we are trying, that we got in all other births, we got it. So animal can do better than us in sense gratification. We all do 4 type of things: ahar, nidra, bhaya, maithun. Ahar means eating, nidra means sleeping, bhaya means defending or afraid, and maithun sex kriya. These are all done by everybody, all the animals, every animal. Nobody has to be taught these things. So everybody knows these things, and this type of material sense gratification is available in all animal life. Animals can enjoy better than you. You need a good bed only to sleep. Animals can sleep anywhere. You may be habituated in good bed. Suppose one day that good bed is not there, you will not get sleep. You have fight with your husband and wife, you will not get sleep. But animals will get nice sleep. So similarly, everything, animals get their food so easily. One elephant eats 1 quintal of food. It gets its food so easily. But we may have to do so much hard work further. So this type of things, whatever is called sense gratification, these are easily available in all animal life. And we have undergone lakhs of lives, of crores of those animal lives. We have got those things. So now it is not the purpose of that. Purpose of that is, what is the purpose of human life? I already previously told once. Tell. Actually, logically at least you tell. So these are whatever we do, animals can do better. So what else humans can do, which animals cannot do? Or bhakti, yes, bhakti. Religious practices, bhakti. These type of things we can do, which is only different. So dharma bihina pashu bhi samana. If you are not in any having religious things, then it is no better than animal life. We may all do very hard work to get a very good bungalow, but in that very good bungalow, after you go to sleep,
After 2 minutes, there is no difference, na? Whether you are sleeping in a bungalow or hut, is there any difference? After you go to bed, after you fall asleep, there is no difference. In fact, it can be opposite also. The person who is sleeping in a bungalow may be afraid of thieves. His money may be stolen. How his business will be there? His business will get disrupted. So he may get less sleep, in fact, compared to a person who is sleeping in the hut. So there is no difference. So we need not aspire too much for these things. This will be there. These things that will get naturally. But we have to aspire for the devotional life. We are all part and parcel of God. Lord tells in Bhagavad Gita, Mamai Bhamsu Jivo Loke, Jivo Bhuta Sanatana, Manos Shasthani Indriyani, Prakriti Sthani Kasthani. Mamai Bhamsu Jivo. So मेरा अंश, जीव मेरा अंश है. मामई वंश जीवोन्मुखे जीवो भूत सनातना, यानी वो जीव जो है सनातन है, इटर्नल है. लाइक भगवान इज इटर्नल, सिमिलरली जीव ऑल हम लोग एक आत्मा है. सभी लोग हमारे, हम लोग एक बॉडी नहीं है. ये बॉडी तो एक ड्रेस का जैसा है. तो हम लोग एक आत्मा है. एज आत्मा हम लोग सनातन है. हम ये आत्मा का कभी मरण नहीं होता है, कभी जन्म नहीं होता है. 2.23 नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दाहति पावका न चैनम क्लेदन्ति आपो न शस्यति मारुता. सो ये जो सोल है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, सो नोबडी कैन कट इट. छिन्दन्ति शस्त्र, बाय एनी शस्त्र और वेपन वी कैनॉट कट दिस सोल. शस्त्राणि नैनम दाहति पावका, पावका मीन्स फायर, फायर कैनॉट बर्न इट. नैनम दाहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो, आपो मीन्स वाटर, वाटर कैनॉट मॉइसन इट. Na shoshati maruta, maruta means wind, wind cannot dry it up. So there is nothing in this world which can destroy this soul. The soul is indestructible. Next slok 2.24 acheddoyam madajjoyam akleddo shosho evacha nitto sarvagato sthano rachalayam sanatanam. And it is fixed and it is sanatan, eternal. So jiva is eternal. Mamai vangsho jivaloke jiva bhuto sanatana. So we are all eternal, but mano shashtani indriyani prakriti sthani karshani. So but by your mind and shasta indriyani, 5 senses and the mind put together 6, by all these 6 senses we are prakriti sthani karshani. We are struggling with material nature, with prakriti. We are all struggling with prakriti. So everybody has different types of problems because we are all struggling with prakriti. We all have a different nature also, satyaguna, rajaguna, tamaguna, or a mixture of this, combination of this. Like 3 colors, 3 primary colors can by a mixture make infinite number of colors mixtures. Similarly, these 3 gunas, satyaguna, rajaguna, tamaguna, can make infinite number of combinations of personalities. So we are all conditioned by these 3 modes, satyaguna, rajaguna, tamaguna. So what are the symptoms of satyaguna? Satyaguna man is very peaceful, religious, he always does religious activities, peaceful, etc., knowledgeable and happy. So and rajaguna is one who is hankering after opposite gender, one who is hankering after some work or other, passionate, very passionate. Today I have to do this, I have to do this, I have to do this, I have to play this, like that. So this is passion, mode of passion, that is rajaguna. And tamaguna is mode of ignorance, one who is fully angry, very angry, or too much into sleep, too much into drinks, too much into illicit activities. These are all tamaguna, symptoms of tamaguna. So everybody is not in pure, nobody is in pure satyaguna, nobody is pure rajaguna, pure. So everybody has a combination of these things. So one mode may be dominant in one person, another mode may be dominant in another person. But even then, so the persons in tamaguna are suffering more compared to rajaguna, and the persons in satyaguna are suffering much less. But still, that is also a chain. It is all are like chain. We are all chained in this material world, controlled by Maya Devi or Durga Devi. We are all chained there by these 3 modes, satyaguna, rajaguna, tamaguna. This chain can be, you can consider like a golden chain, silver chain, or an iron chain. So the iron chain is like the tamaguna, silver chain is like the rajaguna, and golden chain is the satyaguna. So even though satyaguna also is very good, nice for a nice, peaceful, happy life, but still it cannot assure us that we will get freedom from this birth, death, old age and disease. So we all have to undergo this all, for there is no doubt. Jatosho 2.27 Jatosho hi dhruvam mritu dhruvam janma mritosho cha tasmad apuriharjo arthe natam shochitam arhashi. So Jatosho, as long as once we have taken a birth, Jatosho hi dhruvam mritum, death is certain. It's already written there. Now how many number of breaths we'll take, that is already written. So Jatosho hi dhruvam mritum,
Dhruvam Janma Mritasya cha. And when one who is dying, again for him also birth is again assured unless one is liberated. So this cycle is assured. One who is taking birth, he has to die, no doubt. There is no doubt. But there is this is the most astonishing things. Yudhishthir Maharaj was asked by Narad Muni or something, what is the most astonishing thing? So Yudhishthir Maharaj answered that everybody sees in front of them that everybody is dying, but he or she thinks that I will not die. Her or her action will such a way that I will not die. So this is one of the most astonishing things Yudhishthir Maharaj told to Narad Muni when he answered. So Narad Muni told yes. So jatasya hi dhruvam mritur dhruvam janma amritasya cha tasmad apariharjo arthe natam shochitam arsh. So these are all certain. Janma mritu jara vyadhi. Janma, we have to take birth. Jara, we have to become old age. There is we may be enjoying now because we are very youthful. We think very youthful, but we have to become old. So we have to suffer. Janma jara, janma mritu jara vyadhi. Vyadhi means disease. Disease, old age, we have to suffer, and finally death will be there. So these cycles we will go through, and if we don't perform acts like a human being, there is no guarantee that again we will get the human birth. Again we can go back to animal life. So whatever state of mind we have at the time of our death, similar body we get. Yam yam vapi smaranan bhava tajiti ante kalevaram tam tam evaiti kauntya sada tat bhava havita. Yam yam vapi smaranan bhava. So whatever we do smaran, Tyajati ante kalevaram. When we leave, Tyajati means leave, ante means end, kalevaram is body. When we leave this body, yam yam vapi smaranan bhava. Whatever way we are thinking at that time, tam tam evaiti kauntya sada tat bhava. Similar way body will get. So if you are into too much into this type of sense gratification only, eating, sleeping, mating, defending only, so there is high chance that we can get an animal life again, because they can do these things better than us. So if you aspire for these things only, we can get that animal birth. If you are too much attached to our house, I have made this house. If you are too much attached, and if you have not done the thing of a human birth, then it is highly likely that you will get a insect birth in that same house, like ant, lizard, anything, cockroach, anything. You can rat, cat, anything. You can dog, anything. You can get the birth in the same house. If you are too much attached to that house. But if our qualities are not like the human quality, then we can get the animal birth in that same house. So we have to be very careful. Jatashi, so Janma Mrityu Jara Vyadhi. These 4 type of things are there, so we have to be very careful. So we have to go beyond that. We have to perform a religious activity and ultimately perfect our life. Try to perfect our life. We came from God, and we have to go back from God. His life is 15.8 क्या है 15.8 Sanatan Dham. It is will be told about Sanatan Dham. 15th chapter 8th sloka. 15th chapter 5th sloka and 8th sloka. हाँ नहीं 5th निर्माण मोह जित संग दोष आध्यात्मनित्य विनिवृत्त काम दंदैर्विमुक्ता सुख दुःख संगैर गच्छन्ति अमूढ पदम अभयं तम न तद्भाषयते सूर्यो न शशांको न पवक जद्गत्ता न निवर्तन्ते तद्धामो परमं मम. So we have to develop this type of qualities. Whatever 5th chapter was there. So nirmana moha, nirmano, we should become nirmana, free from aman, abhiman, false ego, jita sanga dosha, adhatma nitya vinibritta kama, and give up all klam slowly. Dandair vimukta, free from all dualities. Heat, cold, happiness, distress, these are all dualities. We have to become free from all these dualities. 2.14 उस दिन मैं बोला था ना 2.14 क्या है? नहीं 2.14 15.14 नहीं 2.14 मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखद आगमापायिनो अनित्यस्तम तितिक्षाश्च भारत. मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखद. शीत उष्ण सुख दुःख, these are all sense perception. Suppose 1 lakh rupees is given to me, or suppose 1 lakh rupees is given to 1 billionaire, and 1 lakh rupees is given to one poor person. The poor person will be very happy. Intermediate people will be so okay,
okay, this is good, but it would have been better if I had got 2 lakhs, something like that. The billionaire will not be happy. So happiness, these are all relative also, depending on our level of conditioning. This happiness, distress are also relative. So we have to learn to tolerate both the dual conditions of life, happiness and distress. Both we have to learn to tolerate. So then only we can become steady and we can perform the spiritual activities much more better. We can progress much better. If you learn to become happy, you can be spiritually happy. Spiritual happiness will be there, but material happiness and material distress, both you can try to be neutral. Then we can progress. Similarly, that day you are asking na 2.56. मौर्य दुखेशु अनुदिग्नमन सुखेशु विगत स्पृहा भीतराग भय क्रोध स्थितधीर मुनिरुच्यते. So dukkha, when dukkha comes, one should be, these are the qualities of pure devotee. We cannot imitate, but at least we can our goal should be there. Right now we cannot imitate, but goal should be there. That is the goal of symptoms of a pure devotee. The pure devotee, what he does, dukheshu anudignamana. When dukkha comes, he is anudignamana. He is not disturbed at all. Sukheshu bigotos prayer. When happiness comes, material happiness, he is not elated. Unlike us, we become too much elated. Yeah, I got this. मैं फाड़ दिया. So and when distress comes, we become too morose. Sometimes up to the point of suicide also. So, but a pure devotee, dukheshu anudignamana, sukheshu bigoto spriha, bhito raga bhaya krodha, sthitadir muniruchyate. So he is free from raga, attachment and fear. For all fears, he is not having any fear because he is connected to the God. Once that is one of the greatest symptoms. Once we get connected to devotional life, first symptom is we get relieved from fear. To the amount we are connected to God, to that extent we become fearless. So it is like kitten in the mouth of cat, last time I took the example, or rat in the mouth of a cat. So either एक चूहा है बिल्ली का मुंह में, उसका तो मौत सामने है, या एक कैट का बच्चे को क्या बोलता है? हाँ? बिल्ली का बच्चा को क्या बोलता है? बिल्ली का बच्चा है. बिल्ली का बच्चा अगर उनका माँ का मुंह में है, वो बहुत आनंद में है. सेम बिल्ली का मुंह है, सेम दांत है, बट एक आनंद में है, एक दुख में है बहुत. तो ऐसा हमारा काल हमेशा हमारे, तो जो डिवोटी नहीं है उसको हमेशा ये फियर रहता है. ये मटेरियल वर्ल्ड में वो कितना भी उसका पोजीशन हो अच्छा, कितना भी अच्छा चिल्ड्रन हो, कितना भी हो, बट जो गॉड कॉन्शियस नहीं है उसके अंदर फियर है. तो ये इसी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कौन डिवोटी है कौन नहीं. उसके अंदर वो फियर है, सब चीज़ में उसका फियर है, टेंशन रहेगा. बट जो डिवोटी भगवान का भक्त है, जितना लेवल ऑफ भक्त होगा उसके अंदर कुछ हो चाहे ना हो, वो चाहे सफरिंग में हो, अपरेंटली नहीं हो, बट वो संतुष्ट है और वो फियरलेस है. जितना वो भक्त से कनेक्टेड है, भगवान से कनेक्टेड, उतना वो फियरलेस है. वो चाहे पुअर हो या अमीर हो, वो उसमें संतुष्ट है और वो फियरलेस है. परंतु जिसके पास बहुत कुछ हो बट वो भगवान से कनेक्टेड नहीं हो, वो हमेशा भय में रहता है, कुछ ना कुछ भय में रहेगा ही वो. तो ये डिफरेंस है. तो दुखेशु अनुदिग्नमना, सुखेशु विगतो रागा, भीतो रागा भय क्रोधा, भीतो रागा भय क्रोधा. भय से मुक्त है, क्रोधा वो क्रोध से भी मुक्त है. उसके पास कोई क्रोध नहीं है क्योंकि उसके पास काम भी नहीं है, इसलिए क्रोध कहाँ से आता है? भगवान 2.62 में बोलते हैं, दयतो विषय पुंसन संगस्तेषु उपजयते संगत संजयते कामा, कामात् क्रोधात् अभिजाते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्थिति विभ्रम, स्थिति वंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. ध्यान तो विषय पुंसन, जब हम विषय का ध्यान करेंगे, कोई भी चीज़ का हम ध्यान करेंगे, अगर मैं किसी लड़की का ध्यान कर रहा हूँ या वो लड़की किसी और का ध्यान कर रहा है, या कोई आदमी पैसा का ध्यान कर रहा है, तो क्या होगा? ध्यान तो विषय पुंसन संगस्तेषु उपजयते. तो अगर कोई लड़का कोई लड़की का बारे में ध्यान करते करते अपना जीवन को छोड़ा, तो उसने लड़की का बात लेगा, कोई डाउट नहीं इसमें. तो ध्यान तो विषय पुंसन, जब विषय का ध्यान कर रहे हैं, संगस्तेषु उपजयते, उसमें क्या आएगा? संग आएगा, अटैचमेंट आएगा. संगत संजयते कामा, तो अटैचमेंट आएगा तो काम आएगा, लस्ट आएगा. कामात् क्रोधात् अभिजाते, तो काम तो फुलफिल नहीं हो सकता है, काम को कितना भी दे दो फुलफिल नहीं हो सकता है. तो एक घी डालने जैसा है, आग में घी डालने जैसा, जितना भी दो और जलता ही रहेगा. जब तक आप पूरा जल के रख ना हो जाए, ये जलता ही रहेगा. तो ये पूरा सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है. तो जब नहीं हो सकता तब क्रोध आता है. तय तो विषय पुंसन संगस्तेषु उपजयते संगत संजयते कामा, जब कामात् क्रोधात् अभिजाते, काम फुलफिल नहीं होगा तो क्रोध आएगा.
क्रोधात भवति सम्मोह, तो क्रोध होगा तो हमारा अंदर बिविल्डरमेंट, सम्मोह आएगा, बिविल्डरमेंट। सम्मोहात स्थिति विभ्रम, हमारा मेमोरी जाएगा। स्थिति भंगशत बुद्धि नाश, हमारा जो बुद्धि है वो नाश होगा। बुद्धि नाशत प्रणश्यति, आज हमारा बुद्धि का नाश होगा, हम धीरे धीरे हमारा नाश होगा। नाश होगा मीन्स हम एनिमल लाइफ की तरफ जाएंगे, एनिमल प्लांट लाइफ में जाएंगे धीरे धीरे, ऐसा हमारा नाश होगा। आत्मा का तो नाश नहीं हो सकता है, बट हमको जो अपॉर्चुनिटी मिला था, अच्छा चेतना मिला था, वो चेतना का धीरे धीरे और नाश होगा। सो विल गो टू डिग्रेड टुवर्ड्स एनिमल एंड प्लांट लाइफ। सो हमको वेरी केयरफुल रहना पड़ेगा। तो अर्जुन इधर जो प्रश्न पूछ रहा है 3rd चैप्टर का 1st श्लोक में, तो इतना कुछ भगवान कृष्ण ने बता चुका है। तो इतना डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग भगवान कृष्ण चैप्टर 2 में एक समरी फॉर्म में बता चुका है। तो इसमें अर्जुन का कंफ्यूज क्या हो गया, क्या करना है मुझे? तुम बोल रहे हो बहुत कुछ लास्ट में बोला है 2.72 वैसे कुछ बहुत सारा बोला है। तो उसमें अर्जुन को लग रहा है मेरा मन अभी शांत करना है, शांत होकर मुझे भगवान के पास जाना है, ये चैप्टर 2 का लास्ट में बोला है। तो अर्जुन को लग रहा है अभी तो देन मुझे फाइट तो नहीं करना चाहिए, बट बहुत जगह में कृष्णा बोला है उठो एंड फाइट करो, उठो एंड एत ऐसी ब्रह्म स्थित पार्थ नैनम प्राप्यो विमुह्यति स्थितवश्चम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम अर्चति। सो ऐसा अगर कॉन्शियसनेस किसी का रहेगा, जो 2.71 में बोला ना अपूर्यमानम, ऐसा अगर रहेगा जिसके अंदर कोई काम नहीं है, पूरा मन एकदम शांत स्थित है, वो जन्म मृत्यु के आश्रम में ऐसा है, तो वो भगवान के पास जाएंगे। तो ऐसा अर्जुन सुन के अर्जुन बहुत इंटरेस्टेड हो गया कि मुझे ऐसा होना है। अर्जुन को तो ऐसे ही फाइट नहीं करना चाहिए था, युद्ध तो नहीं करना चाहिए था। तो जो लॉजिक, हम अगर कोई कन्फ्यूजन में है ना, तो हमको हमारे पास 2 चीज़ है, बट उसमें एक हमारा अटैचमेंट रहता है, हमको ये करना है। तो जब हम किसी को पूछते हैं, बट हमारा इंक्लिनेशन रहना यही करना है बोल के एक अटैचमेंट रहता है। तो जब उस तरह का आंसर मिलता है हम बहुत खुश होता है। जो हम चाहता है, जब उस तरह का आंसर मिलता है ना, तब हम बहुत खुश होता है। तो अर्जुन भी चाहते थे एक्चुअली मन से कि युद्ध ना करूं, क्योंकि हमारा भीष्म द्रोण इनको सब मारना पड़ेगा, इसलिए युद्ध ना करूं, ये चाहते थे। तो इसका इंक्लिनेशन ऐसे ही था, कन्फ्यूजन तो था बट इंक्लिनेशन ऐसे ही था। तो जहाँ जहाँ कृष्ण ऐसा बोल रहे हैं उठो और फाइट करो, वो अर्जुन को उतना पसंद नहीं आ रहा है। बट जहाँ जहाँ इसको कृष्ण ऐसा बोल रहा है कि आप पूरे मन में, तो तुम्हारा मन पूरा शांत करो, सभी काम से मुक्त हो जाओ और अब तुम अंत में भगवान को प्राप्ति होगा, इस तरह का अर्जुन को ज़्यादा पसंद आ गया। तो हमारा भी ऐसे ही रहता है नॉर्मली। तो अर्जुन भी सोच रहा है ऐसे ही करो, बट फिर भी किनको कन्फ्यूजन आया तो अपना कन्फ्यूजन क्लियर किया। 2.7 में जैसा बोला ना, कार्पण्य दोषो अपहतो स्वभाव पृच्छामितम धर्म स्वभाव, तो एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं कार्पण्य दोषो कार्पण्य क्यों बोल रहा था, मैं क्यों माइजर क्यों मैं, अच्छा मैं इधर से डाइग्रेस हो गया पूरा, ये मैं बोल रहा था इधर से पूरा इतना जो दूर इधर से आ गया। एक्चुअली मैं वही सोच रहा मैं कैसे इधर आ गया, दूसरे जगह आ गया, तो इधर से आ गया था। कार्पण्य दोषो अपहतो स्वभाव पृच्छामितम धर्म समूढ़चिता। सो कार्पण्य मतलब माइजर मीन्स one who doesn't know how to utilize wealth. Here miser means one who doesn't know how to utilize this precious material body. So he is called miser. This material body, human birth, is very very precious. That's look I came love that from that I digressed actually. So this is very precious, but we don't know how to utilize. We only how to eat, sleep, mate and depend. At the most we can take care of our children, how the children do education, have a good education, that much only at the most we can think. But animals also think that, animals also take care of their baby very nicely, so that is not so, but human life is very precious. So we have, if you are not utilizing that in that way, then you will be called a miser. Miser means one who doesn't know how to utilize a precious thing properly. One who doesn't know how to use the money properly is called miser. One who doesn't know how to utilize this precious human birth, it is very very precious, much precious than wealth, etc. So if you don't know how to utilize this properly, then it is no better than a miserly. Similarly, now Arjuna is accepting that he is a miserly. Karpanno dosho apato svabhava prichhami tam dharmo samudacheta. I am asking you, prichhami means asking, tam means unto you, dharmo samudacheta. I am bewildered. Dharmo samuda means bewildered. I am bewildered about what is dharma. Just Shreya, here again is that term is coming, Shreya. What is Shreya? Real good, not Preya. How to get money, how to get a good wife, how to get a good job. These are all Preya. Now Arjuna is not asking about Preya. Just Shreya. Nishchitam bruhitan me. Nishchitam means definitely, bruhi means tell, tan means that, me means unto me. Definitely tell that to me what is actually good for, real good for me.
Shishyastyaham Shadimam Tvam Prapanam. So I am becoming your Shishya. Shishyaste Aham. I am becoming Shishyaste means your, Aham means I. Shishyastyaham Shadimam. Shadimam means instruct me. Shadimam means instruct, Mam means me. Shadimam Tvam. Tvam means unto you. Prapannam. Prapannam means surrendered. I am surrendering. I am surrendering unto you. Please instruct me. That should be the quality of anybody, any disabled, to have the quality of surrender. In 4.34, Krishna is telling, 4.34 क्या है? Fourth chapter 34th श्लोका. तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवाया उपदेक्ष्यन्ति च ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः. So what should be the mood? Tadvidhi pranipateno, mood of surrender. Pariprashnano means relevant questions. Questions about our spiritual development. Now, not how to make money, how to invest in share market, how to do my job better, how to earn money better. Not this type of things. Tadvidhi pariprashnano. Pariprashna means relevant questions for our spiritual development. And Shevaya. And ultimately one should have the attitude of service. So these three type of things should be there simultaneously. Tadvidhi pranipateno, surrender, mood of surrender should be there. Pariprashneno, relevant questions, mood of asking relevant questions should be there. And sevaya, mood of service should be there. Tadvidhi pranipateno sevaya, upadekshanti jnanam. Then the spiritual master will instruct us in the jnanam. Jnaninas tattadarshini. So if the spiritual master is realized, then he will impart the spiritual knowledge. When these type of things are there in the spiritual in the student, then the spiritual master will impart these things, knowledge unto the heart of the disciple or student who has these three qualities. So similarly, Arjuna here 2.7, he is telling karpanno dosho apato savava prichhamitam dharmo sammuda cheta jasya shan nischitan bruhitan me shishyastyam shadimam tvam prapannam. So he has all these three qualities. He is demonstrating all these three qualities here. So I am becoming your disciple. Please instruct unto me what is good for me. He is asking what is good for me. Here again, he is asking, surrendering and asking what is real good for me. Not about material things he is asking. So this type of things should be there. Then once he asked, then now Krishna will start answering. Then again Krishna has something in second chapter. After he surrendered in second chapter 2.7, this was there. After that Krishna gave so much instructions. Then also he gave instruction about several types of yogas, and Arjuna also again he got confused. So once, as long as confusion is there, you can ask hundreds and thousands of times to clear that confusion. Better than